liquids in solution chapter. हम पहले लिक्विड्स के लिए पढ़ने के पहले इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स के लिए डिस्कस करेंगे. द इंपॉर्टेंट टर्म्स इन लिक्विड्स, फर्स्ट वन इज evaporation. Or it is also called vaporization. What is evaporation or vaporization? The definition of evaporation: the spontaneous conversion of liquid to vapor state. This is called evaporation or vaporization. Here the spontaneous conversion of liquid to vapor state. Here taken one container with liquid. This is liquid. Container taken in dark room. In dark room, the temperature approximately 25 degrees. Here what happens in dark room? The molecules of liquid absorb energy and bond broken in between molecules, then it's try to evaporating. And this vapors and what happened here? The liquid state converts into vapor state. This conversion is known as evaporation. This is vapor state and this is liquid state. This conversion is known as evaporation, or it is also called vaporization. Here, this spontaneous conversion of liquid to vapor state. This spontaneous conversion of liquid to vapor state is called evaporation and vaporization. अगर इधर क्या हो रहा है, लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट्स को कन्वर्ट हो रहा है, क्या? ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स. और इसका फैक्टर्स क्या है अभी डिस्कस करेंगे. फैक्टर्स ऑफ evaporation. The first factor, nature of liquid. Here taken water contains hydrogen bonding. वाटर में क्या हो रहा है?
वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या रहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. एंड अनदर वन इज ईथर. ईथर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या रहेगा, वान डेर वाल्स फोर्सेस. वान डेर वाल्स forces. Now compared to these two liquids, what happens? Hydrogen bonding present in water molecules and van der Waals forces present in ethers. तो इसमें क्या हो रहा है, compared to these two, van der Waals forces are weak forces. So this ether easily evaporate. Means here what happens, the volatility ज्यादा रहेगा ether को compared to hydrogen bonding, because of here in ether van der Waals forces are present. Van der Waals forces are very weak forces to compare to hydrogen bonding. Here volatility of liquid is directly proportional to 1 upon strength of bond. Strength of bond. Here what happens? Volatility increases when strength of bond decreases. Here volatility of liquid is directly proportional to evaporation. The rate of evaporation. The rate of evaporation. So इधर क्या हो रहा है, अगर हम जो लिक्विड लिए वो लिक्विड में वान डेर वाल्स फोर्सेस है, वो इजीली एवापोरेट होगा. अगर इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो ये रूम टेम्परेचर का ने ये एवापोरेशन, रेट ऑफ एवापोरेशन डिक्रीजेस. अगर next factor, second one is temperature. Next factor, temperature. Increasing temperature will always increase the rate of evaporation. Means temperature is directly proportional to evaporation. Now here at room temperature the evaporation less compared to, for example, here temperature increases 25 degree to 50 degree. And what happens here, the rate of evaporation increases, and 52 increases 100 degrees C. The rate of evaporation increases with increasing temperature. अगर हम 25 डिग्रीज का ने रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट किया और टेम्परेचर बढ़ा, तो इधर क्या होता है, रेट ऑफ एवापोरेशन और थोड़ा ज्यादा होगा कंपेयर टू 25 डिग्री सी.
और टेम्परेचर और थोड़ा बढ़ाया तो इधर क्या हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीजेस कंपेयर टू दिस in this state at 100 degree C the rate of reaction is greater than 50 degree C. Next factor, third factor, surface area. Surface area. Surface area means this is liquid and vapor state. What happens? The spontaneous conversion of liquid into vapor state is called evaporation. This evaporation also depends on surface area. वो कैसे डिपेंड करेगा हम देखेंगे इधर. तो इधर surface area means this is called surface area of liquid. When surface area is increases, the evaporation also increases. क्योंकि इधर जो सरफेस एरिया के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स ज्यादा और इजीली absorb energy and broken bonds and easily evaporates. It means जो surface area increases, जो surface area increase, the rate of evaporation also increases. Here surface area of liquids increases the evaporation also increases. Here surface area is directly proportional to evaporation. Here हम जो बात की है तीन फैक्टर्स, वो है नेचर ऑफ लिक्विड एंड सेकंड वन टेम्परेचर एंड थर्ड वन सरफेस एरिया. व्हाट इज नेचर ऑफ लिक्विड? इन नेचर ऑफ लिक्विड जो volatility increases, evaporation also increases, and temperature increasing with increasing evaporation. Here also जो surface area increases, evaporation also increases. अभी जो हम बात कर रहे हैं the rate of evaporation. Actually what is rate of evaporation? The rate of evaporation. The rate of evaporation. The rate of evaporation, the number of molecules, escaping from liquid, escaping from the liquid surface area, the liquid surface area in 1 second. What is the rate of evaporation? The number of molecules escaping from the liquid surface area in 1 second. जो इधर हम बात करेंगे
liquid molecules evaporate to vapor state, अगर 1 second में how many molecules escaping from liquid to vapors is called rate of evaporation. Rate of evaporation. This is first important term. What is evaporation or vaporization? Condensation. Condensation. What is condensation? The change of liquid, the change of liquid, the change of liquid, its gaseous form to liquid form. What is condensation? The change of liquid, its gaseous form to liquid form. For example, here container taken and with liquid, what happens here? At room temperature, the liquid absorbs energy, the molecules evaporate liquid state to vapor state. Liquid state to vapor state. इधर क्या हो रहा है? लिक्विड मॉलिक्यूल्स एवोपरेट होने के बाद इट्स कन्वर्ट्स इनटू gaseous molecules. It is called, this conversion is called evaporation. This is vapor state. Vapor state. Here condensation, what is condensation? The change of liquid, its gaseous form to liquid form. Liquid form to gaseous form. The conversion is called evaporation. This gaseous form to liquid form, this called condensation. तो इधर क्या हो रहा है? जो लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू वेपर्स, गैसेस मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स इधर जाने के बाद क्या होता है? एनर्जी को लॉस करते हैं, लॉस होता है, एनर्जी लॉस होता है इधर. तो एनर्जी लॉस होने के बाद इट्स ड्रॉप डाउन. तो ये क्या होता है? एंड फिर से लिक्विड बन जाता है. What happens here? Vapor state to liquid state. The conversion of vapor state to liquid state is called condensation. Here, this is condensation. And this conversion is evaporation. Evaporation. What is condensation? The change of liquid, its gaseous form to liquid form is called condensation. Now, rate of condensation. Rate of condensation. What is rate of condensation?
the the number of vapor molecules converts into liquid molecules in each second. This is called rate of condensation. Here the conversion of vapor molecules into liquid molecules in 1 second. अगर इधर वेपर मॉलिक्यूल्स लिक्विड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहा है, ये कन्वर्शन अगर हम 1 सेकंड टाइम लिए, 1 सेकंड टाइम में how many molecules converts into vapor to liquid molecules is called rate of condensation. Okay, now हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट थर्ड टर्म वेपर प्रेशर. What is vapor pressure? The pressure exerted by vapors over the surface area of the surface area of the liquid. What is vapor pressure? The pressure exerted by vapors over the surface area of the liquid at equilibrium is called vapor pressure. The liquid molecules converts into vapor molecules is called evaporation. Vapor molecules converts into liquid molecules is called condensation. And here what happens when vapor molecules converts into liquid, the vapor molecules exert the pressure on the surface area of liquid. जो इधर वेपर मॉलिक्यूल्स है वो कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड. इन दिस टाइम इधर क्या हो रहा है, दिस वेपर्स प्रेशर को अप्लाई करेगा किधर, ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड. सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड के ऊपर प्रेशर को रिलीज करेगा और अप्लाई करेगा कौन से वेपर molecules. When at equilibrium, what is it equilibrium here? This is called equilibrium state. In this state, the number of escaping molecules and the number of vapor molecules converts into liquid molecules are here same. This is called इक्विलिब्रियम स्टेट. इक्विलिब्रियम स्टेट का क्या होता है, जो एस्केपिंग मॉलिक्यूल्स, एस्केपिंग लिक्विड मॉलिक्यूल्स एंड द कन्वर्शन ऑफ वेपर्स टू लिक्विड मॉलिक्यूल्स, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इधर सेम रहते हैं. तो ऊपर जाने का और नीचे आने का मॉलिक्यूल्स का नंबर इधर कांस्टेंट रहेगा. जो कितना वेपर्स एवापोरेट हो रहा है उतना ही
vapors converts into liquid. Where in this state, the number of molecules constant. This state is called equilibrium. And here the rate of evaporation, the rate of condensation equals. Here what happens? The rate of evaporation equals to the rate of condensation. Here we are also explained vapor pressure. Vapor pressure means the rate of evaporation is equals rate of condensation. The rate of evaporation is equals to the rate of condensation is called vapor pressure. Vapor pressure. जो इधर remember जो important thing है इधर evaporated and condensed. When evaporated molecules converts into vapor molecules थोड़ी देर के बाद वो एनर्जी की लॉस करेगा. एनर्जी लॉस होने के बाद इट्स कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड मॉलिक्यूल्स. व्हेन दिस कन्वर्शन इज ongoing, then the vapor molecules pressure को apply करेगा where surface area of the liquid. That pressure is called vapor pressure. Vapor pressure. Now discussing factors of vapor pressure. Factors of vapor pressure. Here first one is nature of liquid. Nature of liquid. Take 3 containers. With one is water. वाटर में क्या रहेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. एंड टेक HCl. इसमें नॉन हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगा. एक ईथर में क्या रहेगा? फोर्सेस वांडर वाल फोर्सेस जो मैं पहले बताया. क्या अगर लिक्विड में जो वीक फोर्सेस रहते हैं उसका वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगा. तो इधर वोलेटिलिटी ईथर का ज्यादा रहेगा. when volatility increases, vapor pressure also increases. Here the attractive forces decreases, volatility increases. When volatility increases, vapor pressure also increases. Vapor pressure
increases. नेचर ऑफ लिक्विड, इन नेचर ऑफ लिक्विड में क्या हो रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स कम है और वोल्टालिटी ज्यादा रहेगा. व्हेन वोल्टालिटी ज्यादा रहेगा वेपर प्रेशर क्या होता है, ऑटोमेटिकली इंक्रीजेस, वो भी ज्यादा रहेगा. तो सेकंड फैक्टर टेम्परेचर. Vapor pressure increases with increasing temperature. Vapor pressure increases with increasing temperature as kinetic energy of molecules increases. So इधर क्या हो रहा है, when temperature increases evaporation increases. When evaporation increases automatically condensation also increases. When this both increases vapor pressure also increases. So here when temperature increases vapor pressure also increases. This increasing temperature we can calculate with help of Clausius-Clapeyron equation. That is Clausius-Clapeyron equation. Here log P1 by P2 that is equals delta H vaporization, enthalpy vaporization by 2.303 capital R is gas constant into 1 by T1 minus 1 by T2. This is Clausius-Clapeyron equation. Log P1 by P2 that is equals delta H vaporization by 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2. This is equation. हम ये इक्वेशन को यूज करके इधर वेपराइजेशन का टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकता है. वेपर प्रेशर इंडिपेंडेंट ऑफ द सरफेस एरिया. वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द surface area. And vapor pressure is a intensive property. It means it does not depends on quantity of liquid. Vapor pressure is independent of the surface area and vapor pressure is a intensive property. अगर हम एक बीकर में लिक्विड लिए एंड एक टेस्ट ट्यूब में लिक्विड लिए, अगर इधर क्या हो रहा है, इसको क्वांटिटी ज्यादा है, इसका क्वांटिटी कम है, एंड ऑल्सो यार सरफेस एरिया ज्यादा है, इधर कम है. अगर हम कैलकुलेट करने के टाइम में इधर वेपर प्रेशर को एक यूनिट लेके कैलकुलेशन कर रहा है. इधर वी कैन कैलकुलेट हियर वी टेकन ओनली 1 यूनिट ऑफ द लिक्विड, व्हाटएवर मे बी. अगर हम बीकर में लिए, कंटेनर में लिए, टेस्ट ट्यूब में लिए, जो हम इधर क्या करेगा, एक यूनिट लेके वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करेगा. इसलिए इधर वेपर प्रेशर इंडिपेंडेंट ऑफ द सरफेस एरिया एंड
it is a intensive property, means it does not depends on quantity of liquid. This is the thought on vapor pressure. Fourth one, boiling point. What is boiling point? The temperature at which the vapor pressure of liquid becomes equals to atmospheric pressure is called boiling point. Here the temperature at which the vapor pressure of the liquid becomes equal to atmospheric pressure. External pressure. Atmospheric pressure means external pressure. Here taken container with water. For example, here water. Okay, this taken at a dark room. In the dark room, temperature is 25 degrees. These vapors are formed. Now here what happens? The temperature at which the vapor pressure of the liquid becomes equal to atmospheric pressure. Vapor pressure is equals to atmospheric pressure, where the temperature is called boiling point. For example, here water taken in a container in the dark room. In the dark room, temperature approximately 25 degrees C. In this state, the water started vaporization. Then, for example, here we know that atmospheric pressure is 1 atm, that is equals 760 mm of Hg mercury. अगर हम 25 डिग्रीज एनर्जी दिए वाटर को, तो इसका वेपर प्रेशर फॉर एग्जांपल यार 0.2 एटमॉस्फेयर. अगर टेम्परेचर को और 50 डबल करेंगे 25 से टू 50 डिग्री से, इसका प्रेशर वेपर प्रेशर इज 0.5. अगर हम 25 डिग्री से 50 डिग्री को टेम्परेचर को बढ़ाया, तो इधर व्हाट हैपेंस, वेपर प्रेशर आल्सो इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर. अगेन इस टेम्परेचर को और थोड़ा बढ़ाए तो इधर ये भी आल्सो इंक्रीजेस. वाटर को 75 डिग्री से हीट कर दिया, तो इधर वाटर हैपेंस, वेपर प्रेशर आल्सो इंक्रीजेस. देन व्हाट हैपेंस हियर, अगर ये वाटर को और थोड़ा 100 डिग्रीज को हीट करेंगे, इसका वेपर प्रेशर क्या होता है, 1 atm. 1 atm. It is equals to what is this, vapor pressure of
water. Its vapor pressure of water becomes equals to atmospheric pressure. What is atmospheric pressure? 180 m is equals to 760 mm of mercury. Where at 100 degrees C. 100 डिग्रीज को वाटर को 100 डिग्रीज का हीट करे तो ये वाटर का वेपर प्रेशर 180 m है. तो 180 m किससे इक्वल है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इक्वल है. तो हम जो इधर बात कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट. व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो अभी इधर बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इधर 100 डिग्री से 100 डिग्रीज को 100 डिग्रीज करें वाटर को हीट करे तो इसका वेपर प्रेशर becomes equals to atmospheric pressure. This is called boiling point. Now factors of boiling point. Factors. First one, nature of liquid. Nature of liquid. Nature of liquid. Here intermolecular forces. Intermolecular forces. Here hydrogen bonding, van der Waals forces. Here हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में प्रेजेंट रहते, अल्कोहल में एंड एसिड्स आल्सो. Here van der Waals forces present in H2S. अभी ये नेचर ऑफ लिक्विड के लिए डिस्कस करें तो इधर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे. इधर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है? वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड van der Waals फोर्सेस. van der Waals फोर्सेस आर वीक फोर्सेस कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. जो यार van der Waals फोर्सेस वीक फोर्सेस है वो एनर्जी को रिक्वायर करेगा स्मॉल क्वांटिटी. अगर इधर थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज करे तो इसका वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल्स टू atmospheric pressure. But here when hydrogen bonding present in a liquid, it is absorbs more energy at temperature. Means here what happens? Boiling point greater than to this liquids. Here boiling point किससे ज्यादा रहेगा? वाटर, अल्कोहल, एसिड को ज्यादा रहेगा क्यों कंपेयर टू H2S. क्योंकि इधर van der Waals फोर्सेस वीक फोर्सेस है. ये लेस टेम्परेचर को रिक्वायरमेंट है इधर. तो इधर ज्यादा टेम्परेचर को रिक्वायरमेंट है क्योंकि इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो इधर व्हाट हैपेंस? volatility increases, boiling point decreases. What happens here? Volatility increases, boiling point decreases. अगर इधर volatility increases, strength of bond decreases. अगर इधर strength of bond ज्यादा है तो इसका volatility क्या होता है? लेस. देन व्हाट हैपेंस हियर? बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा. अगर वन मोर एग्जांपल हियर CCl4 एंड इधर C6H12 cyclohexane and carbon tetrachloride. Here
compared to these two are non-polar compounds. But CCl4 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा तो कंपेयर टू दिस बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CCl4 ज्यादा है. मॉलिक्यूलर मास ऑफ CCl4 इज मोर देन C6H12. तो अब इधर क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर मास के ऊपर भी बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा. एंड नेक्स्ट वन, सेकंड, एक्सटर्नल प्रेशर. एक्सटर्नल प्रेशर. अगर एक्सटर्नल प्रेशर इधर 1 atm ले तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है. अगर इधर एक्सटर्नल प्रेशर 0.8 ले तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, 75 डिग्री सी. अगर इसका एक्सटर्नल प्रेशर हम 0.5 atm ले तो इसका 50 डिग्री सी रहेगा लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट. फिफ्थ टर्म, what is freezing point? What is freezing point? The temperature at which the vapor pressure of liquid equals to the vapor pressure of solid. What is freezing point? The temperature at which the vapor pressure of liquid equals to the vapor pressure of solid state. Here observe this graph in between temperature and vapor pressure. Temperature and vapor pressure. टेम्परेचर एंड वेपर प्रेशर के बीच में जो ग्राफ बना रहे, ये ध्यान से देखो, सुनो. Here what happens? This is atmospheric pressure. Here हम liquid, here observe clearly, लिक्विड जो टेम्परेचर इंक्रीजेस वेपर प्रेशर इंक्रीजेस. दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड TB, बॉइलिंग पॉइंट. तो इधर क्या हो रहा है, लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करे तो वेपर प्रेशर इंक्रीजेस. at TB vapor pressure becomes equals to 1 atm. It is called boiling point. Now when temperature decreases, the vapor pressure of liquid also decreases. At this particular point, the liquid immediately converts into solid. This point is called freezing point. This temperature is called freezing point. What happens here? Liquid converts into solid at this point. अगर हम और थोड़ा टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर आल्सो डिक्रीजेस. Here what happens? This is
liquid state, this is solid state. The vapor pressure of liquid is equals to the vapor pressure of solid. At this temperature is called freezing point. This point indicates freezing point. This is fifth term, freezing point. These 5 terms, one is evaporation, second one is condensation, third one is vapor pressure, and fourth one is boiling point, and fifth one is freezing point. These 5 terms very important for colligative properties. हम colligative properties में इस 5 terms use करके हम वो colligative properties explain करेगा. This is very most important terms. Thank you. Raoult's law. In Raoult's law, this beaker with A liquid and this beaker with B liquid, and this is A plus B. It is solution. A liquid partial vapor pressure is PA naught. B liquid partial vapor pressure of PB naught, and here in the solution A partial vapor pressure PA and this B partial vapor pressure is PB. The total vapor pressure of the solution is PT. Here, what is Raoult's law? The Raoult's law for a solution of the volatile liquids, the partial vapor pressure of each component is directly proportional to its mole fraction. What is Raoult's law? The partial vapor pressure of each component is directly proportional to its mole fraction. For a solution of the volatile liquids, this is A volatile liquid, this is B volatile liquid. PA naught is vapor pressure of pure A, this is vapor pressure of pure B, and PA is partial vapor pressure of A, PB is partial vapor pressure of B in solution. According to Raoult's law, partial vapor pressure of each component is directly proportional to its mole fraction. Partial vapor pressure of A is PA is directly proportional to XA, its mole fraction of A. Here PB is directly proportional to XB. Here PA is
partial vapor pressure of A, XA is mole fraction of A, PB is partial vapor pressure of B, XB is mole fraction of B. Here PA is equals PA naught XA. Here PB is equals PB naught XB. In this equation, PA naught is vapor pressure of pure liquid A, vapor pressure of pure liquid B. We know that according to Dalton's law, according to Dalton's law, what is Dalton's law? The total pressure, the total vapor pressure of solution is equals to sum of partial pressures. According to Dalton's law, the total vapor pressure of solution is equals to sum of partial pressures. Here, vapor pressure of solution is PT is equals to sum of partial pressures PA plus PB. Consider this equation 1 and equation 2. This is equation 3. From equation 1 and 2, the above equation is PT is equals PA is equals PA naught XA plus PB naught XB. This is Rolle's law. XA plus XB, that is equals to 1. XA is equals to 1 minus XB, or XB is equals to 1 minus XA. Now from equation 3, from equation 4, PT is equals PA naught XA plus PB naught XB. XB, that is equals to 1 minus XA. Here PT is equals PA naught XA plus PB naught minus PB naught XA. Now here PT is equals PA naught minus PB naught into XA plus PB naught. Here PA naught greater than PB naught. Next, PT is equals, from equation 4, PT is equals PA naught XA is equals 1 minus XB, that is equals XB plus PB naught XB. Here that is equals PA naught
PA naught plus PA naught plus PB naught minus PA naught into XB. Here PB naught greater than PA naught. This is Raoult's law. In this Raoult's law, these three equations very important.